Good morning, one and all, dear students. So that day I explained you about the cube and cube roots and exercise 4th A. So last question is remains, that is the question number 4. Okay, that question is what? Now see here. Find the odd numbers to be added to get the following cubes. Find the odd numbers to be added to get the following cubes. So the meaning of this question is what? Your first problem is what? 7 cube. 7 cube means you know very well, you can easily find what is the cube of this 7. But you have to write the sum of odd numbers. Okay, 7 cube means what? Actually 343. So how many odd numbers you have to add to get this number, and which odd numbers are there? Which odd numbers are there? So it is very easy to find how many odd numbers are there, but which are they? That we have to find by using the formula. Okay. Now listen here. Here 7 cube means how many odd numbers are here? Having sum is 3, 4, 3. There are 7 odd numbers. Okay, there are 7 odd numbers. Suppose 2 cube. 2 cube means 8. This is the sum of 3 and 5. 3 plus 5 equal to 8. Okay, 2 odd numbers. 2 cube means sum of 2 odd numbers. 3 cube means sum of 3 odd numbers. So 7 cube means sum of 7 odd numbers. But that which odd numbers are there, that is must to find it. Okay. So 2 cube means 3 plus 5. 3 cube means 7 plus 9 plus 11. So how to get these numbers, this odd number? So there is a formula to find it. Okay, that formula I will explain you. Now listen here, what you have to do here for getting the first odd number and the next odd number. Okay, so see here. 3 cube here. Okay, your number is what? 3. So what you have to do here? You have to multiply this number to its previous number and then add 1 to get the first odd number. What you have to do? You have to write this number. You have to multiply this number to its previous number. That previous number means 2. Okay, and add 1. So what you can get here? 3 2s are 6 plus 1. This will be equals to 7. So first odd number is 7. Okay. Then again you have to add 2 more odd numbers because there are 3 odd numbers. So next odd number is 9 and then next odd number is 11. Okay. So in this way you can easily find it. So the formula I will explain you, but before that we will solve this problem first. Okay. So now see here 7 cube. 7 cube means you know very well there are 7 numbers, 7 odd numbers are there. But which is the first one? So what you have to do here? You have to multiply this number 7 into previous number of this 7, that is 6, then plus 1. Okay, so this will be equal to 7 6 are 42 plus 1. This will be equal to 43. Okay, so now your first odd number is 43. Then can you find the next odd number? After 43, 45 is the next. How many you have to write? There are total 7 odd numbers. Means next one is 47, then 49, then 51, then 53. How many? 1, 2, 3, 4, 5, 6. And then last one is 55. So these are the odd numbers having sum is what? This one. 343. So this will be equal to 340. So in this way you can get the odd numbers. Okay, understood? Now I will explain you the formula. Formula is what? You have to multiply this number. Suppose this will be equal to n cube. This will be equal to suppose n. N means any number having cube. This what you have to do here. First you write this number. आपने 3 लिखा, so you have to write n here into its previous number. So how to get the previous number? आपने क्या किया? 2 कैसे मिला? 3 minus 1 किए, तो वैसे हम n minus 1 करेंगे. So then plus 1. So this is your general form. This is the general form. Okay. So by using this formula you can easily get this one. वो मैंने general form यहाँ लिखा. Understood? So write down this. That also you have to write and this one. Okay. So can you find the next problem? 12 cube is there. 12 cube. How many odd numbers are there? 12 cube means 12 odd numbers are there. Okay, 12 odd numbers are there. Then what you have to do here? 12 into its previous number 11 plus 1. So you will get the first odd number. 12 into 11 means what? So you can write here 12 into 11. 11 to the 22. 2 remains. 11 to the 22. Sorry, 11 to the 11 plus 2.
132 plus 1, this one means you can get 132. So your first number is 132, second number is 135. So can you get the remaining numbers? In this you have to write 12 numbers. 12 numbers. You will get the, okay. So in this way you can get the cube of 12. So what you have to do with the cube of 12, that you have to write here. Now listen here. First it is must to remember all these cubes. 1 to 10. You have to remember these cubes. Okay. So now next one is what? Prime factorization of perfect cubes. So shortly I will explain you this one. Prime factorization of just a minute. This one is over exercise 4th B. Now cube roots are remaining. So write down this first. Over. Cube roots. See how to find the cube root. Now listen here. There is one of the method to find the cube root. Just like if you want to find the square root of the number, we have to use the method to find the square root of the number, that is the factorization method. It is called prime factorization method, and another method, that is the division method. But the division method we have to use only in square root. Okay, if you want to find the square root of, so that time you can use both methods, prime factorization and division method. But if you want to find the cube root of any number, so there is only one method, and that is prime factorization only. Okay, so see here. Exercise 4th C. Okay, exercise 4th C. Now see here, cube root is there. You know very well, in square root. In square root, the symbol of the square root is what? This term. This is the symbol of square root. Square root. When you have square, square means what? 2, and cube means what? 3. Okay. So where is the square? Square जहाँ लिखा नहीं है, सिर्फ root sign. This is the sign of root only. But we have to read this square root. For example, जैसे 1 है. This is negative or positive? This is positive. But plus sign is not written there. It is not necessary to write plus here. But suppose the sign, negative number is there, then it is must or it is necessary to write negative sign. Plus sign लिखना जरूरी नहीं, लेकिन negative sign, minus sign लिखना जरूरी है. So like this, square root में square यहाँ रहता है. वो लिखना जरूरी नहीं लिखे, इसका मतलब वहां पे 2 है, यानी स्क्वायर है. सो स्क्वायर रूट, इस साइन का नाम है रूट और ये है 2. सो स्क्वायर रूट, 2 रूट नहीं, स्क्वायर रूट. When the cube root is there, so same sign you have to use, but cube number it is necessary to write cube root. स्क्वायर रूट रहा तो 2 लिखना जरूरी नहीं, लेकिन क्यूब रूट रहा, 4th रूट रहा, 5th रूट रहा, तो आपको लिखना जरूरी है. सो क्यूब रूट मींस लाइक दिस you have to write. Understood? Now see here, in square root suppose 16 square. Okay, 16 square. Okay, 4 square, this will be equal to 16. 4 square means 16. Okay, if you want to find the square root of this 16, we have to write like this. 16 square root of 16, this will be equal to 4. ऐसा लिखते हैं हम. Okay, so कैसे आता है ये 4? So square root में जब कोई नंबर लिखते हैं, square root 16. Okay, square root of 16. If you want to find the square root of 16, तो हम क्या करते हैं इसमें कि ये जो 16 है ये किसका स्क्वायर है फाइंड करते हैं. तो ये 16 का मतलब क्या होता है? 4 into 4. मतलब ये होता है 4 स्क्वायर. 4 स्क्वायर यहाँ तो ऑलरेडी स्क्वायर है ही जो हम लिखते नहीं, तो ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है और बचता है सिर्फ ये 4. तो इस तरह से आता है वो स्क्वायर रूट ऑफ 16 मींस 4. इस तरह से आता है. ओके, सो क्यूब रूट भी ऐसे ही आता है. क्यूब रूट कैसे आता है? इसे एक बार अच्छे से देखो ये वीडियो, फिर एक बार, ठीक है, मैं क्यूब रूट समझा रहा हूं. क्यूब रूट यू नो वेरी वेल, 3 क्यूब मींस 27 होता है. 3 क्यूब मींस 27. नाउ क्यूब रूट ऑफ 27 इज इक्वल टू, अब आपको पता है तो आप डायरेक्ट 3 लिखोगे, बट हाउ इट कम्स, सी, तो आप क्या करोगे इसके लिए? क्यूब रूट ऑफ 27 मींस इट इज द प्रोडक्ट ऑफ 3 सेम नंबर्स, दैट इज 3 into 3 into 3. ये तो आप ऐसे निकालोगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, आपको ये मिल जाएगा. मतलब आप ऐसा भी लिख सकते हो कि यहाँ पर 3 into 3 into 3 मतलब 3 का क्यूब, ऐसे इसका मतलब होता है.
ये 3 into 3 into 3 में 3 क्यूब, तो ये 3 क्यूब मतलब ये 3 और ये क्यूब रूट 3 ये कट जाते हैं, ये क्यूब और ये क्यूब रूट 3 कट जाते हैं और यहाँ बचता है सिर्फ 3, तो वो 3 हम वहां लिखते हैं, समझे, वो 3 हम यहाँ लिखते हैं। तो इसलिए क्यूब रूट ऑफ 27 मींस 3, तो इस तरह से आता है, दिस इज द मेथड, इतनी मेथड है ये फॉलो करने के बाद वो आता है। तो इस तरह से नंबर आपको आगे चलकर आएंगे, तो इसे आप याद रखिए। ओके, सो नाउ लिसन नेक्स्ट, your first problem is what, it is already given here, find the cube roots of the following, okay, exercise 4th C, page number 60, 9 cube, it is very easy, 9 cube इतना दिया है आपको, वैसे तो आपको पता है 9 क्यूब व्हाट इज द, आपको क्या फाइंड करना है, व्हाट यू हैव टू फाइंड हियर, यू हैव टू फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 9, तो आप क्या लिखोगे, क्यूब रूट ऑफ 9 इज क्यूब रूट ऑफ 9 ऐसा लिखोगे, क्यूब रूट ऑफ 9 भी नहीं, 9 क्यूब का क्यूब रूट फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, 9 क्यूब का क्यूब रूट, क्या लिखा है, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग, किसका, 9 क्यूब, 9 क्यूब का क्यूब रूट। अब 9 क्यूब का क्यूब रूट कैसे फाइंड होता है, तो ये इजी है, ये क्यूब और ये क्यूब रूट कैंसिल हो गया, बचा है सिर्फ 9, तो 9 क्यूब का क्यूब रूट 9 है, ओके, 9 का क्यूब होता है 729, अगर आप 729 का भी क्यूब रूट निकालोगे तो 9 ही आएगा, या फिर 729 का मतलब होता है 9 क्यूब, तो 9 क्यूब का भी क्यूब रूट 9 ही आएगा, क्योंकि नंबर सेम ही है, सिर्फ यहाँ क्यूब रूट क्यूब के फॉर्म में लिखा है, ये नंबर पूरा फॉर्म में लिखा है। ओके, सो नाउ नेक्स्ट, यहाँ -6 क्यूब है, b, दिस इज फर्स्ट b, -6 क्यूब, -6 होल क्यूब, सो क्यूब रूट ऑफ -6 होल क्यूब इज इक्वल टू, क्या करना है, सिर्फ ये क्यूब और ये क्यूब रूट कैंसिल, रिमेनिंग नंबर इज -6 ओनली ओवर, okay, so cube root of -6 cube is equal to only -6. One more, that is question E, 0.4 cube, 0.4 cube, आपको क्यूब रूट फाइंड करना है, so cube root of 0.4 cube is equal to, so cube and cube root cancel, remaining बचा हुआ नंबर है 0.4, okay, understood, cube root of 27, 3, like this you have to find it, okay, so now the second question, find the cube roots of the following cubic numbers by prime factorization method. So same, you already solved such type of problems in a square and square root, okay, so क्या find किया आपने, find the square root of the following number by using prime factorization method। अब आपको क्या फाइंड करना है, क्यूब रूट फाइंड करना है बाय सेम मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। वहां पर हमने क्या किए थे, प्राइम फैक्टर्स निकाले, उसके प्राइम फैक्टर निकाले, बाद में 2 नंबर्स की हमने पेयर किए, और 2 नंबर की पेयर करने के बाद एक नंबर को कॉमन निकालकर उसका प्रोडक्ट किए। तो यहाँ पर भी सेम वैसे ही करना है, वहां 2 नंबर की पेयर बनाई थी, यहाँ पर 3 नंबर की पेयर बनानी है, और 3 में से एक नंबर बाहर आएगा, उनका प्रोडक्ट करना है। सेम मेथड इज हियर, ओके, सो आई विल एक्सप्लेन यू वन ऑफ द प्रॉब्लम। सो फर्स्ट ही लेते हैं 343, हमें पता है 343 का क्यूब रूट है 7, 343, ओके, तो इसके प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं, तो आपको पता है 343 ऐसे लिखना है, सेम मेथड स्क्वायर रूट वाली, ओके, सो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 3, कितना आता, 3 1 3, कितना आता, अगेन 3 1 3, नहीं होता 3 से 7 49, right, 49, then again it is divisible by 7, 7 7, again it is divisible by 7, 7 1, okay, so this is 7 into 7 into 7, okay, so आपको फाइंड करना है इसका क्यूब, तो आपको लिखना है क्यूब रूट ऑफ 343 इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 7 into 7 into 7। आपने यहाँ स्क्वायर लिखे थे, मतलब स्क्वायर लिखा नहीं था, कुछ नहीं लिखा था, स्क्वायर रूट था, तो हमने 3 नंबर की पेयर बनानी, और नंबर अगर होते तो इसकी भी पेयर बनाए गए, और 3 में से एक को कॉमन निकालना है, ओके,
Okay, the cube root of 343 is what? 7. So in this way you have to find. Can you find it? Can you find the remaining problems? एक और बता दूं? Point वाला है D, question D. 4.096. Okay, last question. Write down this. Question D. 4.096. यहाँ से लिखेंगे 4.096. 4.096. Okay. So this is divisible by 2. So what we can get here? 2. Then 48. Half of this one is 48. Then again divisible by 2. 1 half of this one is 24. Again divisible by 2. It's half or it's half 12. Again divisible by 2. 2 2s are 4. 1 1 2 5 are 10. 1 2 2 6 are 12. Again it is divisible by, so 1 and 56 का half, how many? 29 27. कितना? 56 का half of this one is what? 28. Again it is divisible by 2. This one is 6. This one is 4. Then it is divisible by 2. This is 32. Again it is divisible by 2. 16. Again it is divisible by 2. 8. Okay, how many numbers are there? It is there. Okay. Again it is divisible by 2. 4. Divisible by 2. 1. Okay. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So this will be equals to, लिख सकते हैं यहाँ पर, cube root of 4.096 is equal to cube root of, both side नंबर यहाँ पर 12 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 into, ठीक है, टोटल 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 नंबर्स हैं. तो आपको पेयर बनानी है 3 नंबर की इस तरह से. इन तीनों में से एक कॉमन निकलेगा, इन तीनों में से एक, इसमें से एक और इसमें से एक. सो 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16. 16 means what? Actually this is the 1.6. Okay, this is 1.6. So in this way you can get the answer. The cube root of 4.096 is what? 1.6. So 1.6 into 1.6 into 1.6 is equal to 4.096. Okay. So in this way you have to find, this is the prime factorization method to find the cube root of numbers. Okay. So only question first and second that you have to solve. From question number 3, 4, 5, 6 I will explain you. Okay. So till then, thank you.